Hello student, welcome to online lecture series on measurement instrumentation or instrumentation control mechanical fourth semester. Myself Kapil Dama, assistant professor, Science and Institute of Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, in lecture 16, we continue from lecture 15. The topic we discussed, that is regarding the rotameter, turbine flow meter, hot wire anemometer and electromagnetic flow meter. So as you know, in the rotameter, which is come under variable area meter, consists of tapered measuring tube and a float. This arrangement produces a resistance value, coefficient of resistance for the float, which depend upon its position in the measuring tube. So for this we have to make a balance which is achieved between the force of the flow stream and the weight of the float. So float position itself vertically within the measuring tube such that the resistance value is balanced. So inside of the measuring tube is conical and has guide strips for the float. So for physical indication, there is a scale on the outside to indicate the flow rates. So metal versions are available that have a means of transmitting the float position. The measuring tubes can be made from stainless steel plates, that is polypropylene, Teflon. Okay. Also, a number of various floats are available. So these are the diagrams what we discuss till now. That is a conical shape flow. The rotating float is used for the direct control. Okay. So another type that is available is unaffected by viscosity, and a modification of this is available that magnifies the sensitivity of the operating range by 30%. दो हमारे पास रेंज है, एक थोड़ा सा स्लाइटली थिन है और एक थोड़ा स्लाइटली वाइड है, और इससे आ रहा हुआ क्या कि जो सेंसिटिविटी है ऑपरेटिंग पॉइंट रेंज की वो 30% इंक्रीज हुई है. सो बट इज़ मोर सेंसिटिव टू विस्कोसिटी. What is the operation behind the rotameter is that it is a vertical tube of conical shape. The area gradually expanding from bottom to top and allowed to flow into upward direction in the tube. जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर जो फ्लो है वो डायरेक्शन में इस तरह चलेगा. ग्रेविटी से जो फ्लो है वो इनसाइड की तरफ लगेगा. ओके. So if a disc is placed which is free to move in the fluid path, it acts as a float in the fluid. So an orifice is set up between the perimeter of the disc and inside surface of the tube with corresponding pressure drop. Initially, when there is no fluid flows through the rotameter, then float is at equilibrium in the vertical tube. Although, what obvious बात है कि जब आप रोटामीटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको वो उसमें जो फ्लोट है वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर अचीव्ड है. And when fluid flows through the rotameter, it will affect the pressure drop, altering the relation between the inlet and the outlet pressure, thus upsetting the equilibrium for force act on this disc. The disc will then move up or down the tube there by creating variable area of the orifice until the pressure drop is at original value when the force are at again equilibrium. The position of the float in the tube is then measured or the rate of the flow. What is the advantage of rotameter? It is it gives direct visual indication on a linear scale. Low cost, it has high accuracy. A rotameter requires no external power or fuel. It uses only the inherent properties of the fluid along with gravity to measure the flow rate, and relatively simple device. And it can measure, it can be mass manufactured out of cheap materials, allowing to use for widespread use. What the disadvantage we observe in the rotameter? That is, graduations on a given rotameter will only be accurate for a given substance at a given temperature, and rotameter normally require the use of glass, okay, other than transparent material. Otherwise the user cannot see the float कि float का जो movement है वो up है या down है. So this limits their use in the many industries to benign fluids such as water, and not easily adapted for reading by machine. नेक्स्ट वी हैव द स्टूडेंट द टर्बाइन फ्लो मीटर. जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, वी हैव अ टर्बाइन एंड वी हैव अ मैग्नेट. वी हैव द फ्लो का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट है, और यहाँ पे हमने जो है रोटर बियरिंग लगाई हुई है, स्टीम लाइन स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, टर्बाइन रोटर लगाए हुए हैं, सॉफ्ट आयरन बार लगाया हुआ है, मैग्नेट हमने लगाया हुआ है.
और सॉफ्ट आयरन बार और मैग्नेट से जो है सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर हमने जो कॉइल माउंट किया हुआ है वो डिजिटल काउंटर है कि कितनी बार वो जो है काउंट टर्बाइन हमारी रोटेट कर रही है। और फ्रिक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर हमने यहाँ लगाया हुआ है स्टूडेंट। ओके, the principle behind the turbine flow meter, that is are inferential measuring devices which measure a flow rate indirectly by the using the natural kinetic energy of a flow as it passes through the angled blades of the turbine rotor. So this causes the turbine to spin, and as the blade passes by a closed pre-position magnet or other technology pickup coil, the resulting interruption of the coil magnet by each blade results in a pulse being produced. So the frequency of this pulse is directly proportional to the point velocity reading it is taking. From this point, velocity and cross-sectional area of the pipe from through a rough volumetric flow rate can be calculated by the formula, that is Q is equal to Kxn, K into N. K is the constant for any given meter and N is the rotational angular velocity. So what the advantage of turbine flow meter? We have that a higher accuracy, good repeatability. At disadvantage, very highly expensive. Okay. Next we have the electromagnetic flow meter, student, which are very important in the industrial use. Okay. The principle behind the electromagnetic flow meter is, that is the basic principle of operation of electric magnetic flow meter is Faraday law of electromagnetism, which is very important, which you study in your 11th and 12th classes. So what is that law? That is, whenever a conductor cuts lines of the magnetic field, और induced EMF is generated. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म कंडक्टर जब आपके मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो एक इंड्यूस EMF वहाँ पे जनरेट होता है। सेकेंड जो फेरेडे लॉ है वो कहता है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस EMF इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ विच दीज लाइन्स आर कट, यानी कि किस रेट से कंडक्टर इन लाइन्स को कट कर रहा है, इंड्यूस EMF उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो EMF इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका इंड्यूस EMF है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर and the magnetic field. So this is the simple diagram of electromagnetic transducer. That is we have north pole and south pole magnet and we have a needle in between, और हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने एक ये इंड्यूस EMF हम वोल्टेज करने के लिए हमने यहाँ लगा रखा है, नीडल हमने लगा रखी है। तो जैसे ही ये फील्ड में डिस्ट्रैक्शन होगी वो नीडल के द्वारा वहाँ पे शो हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ हमने एक यूनिफॉर्म कंडक्टर में एक नॉर्थ एंड साउथ पोल में पाइप का कंसेप्ट यहाँ फ्लो बना रखा है। तो अब हम कंडक्टर के लिए यहाँ पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस d है तो इंड्यूस EMF जो है हमारा इस तरीके से हम यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट, दैट इट इज मे आइदर AC और DC अराउंड ए नॉन कंडक्टिंग पाइप। So two electrodes are inserted in a tube, their surface is being flush with the inner surface of the tube and in contact with the liquids. So as the conductive liquid flows through the insulated tube with an average velocity v, then it may be considered as a series of flat conductor disc passing through the magnetic field. तो स्टूडेंट जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक नॉन कंडक्टिव ट्यूब में एक एक्साइटेशन कॉल नीचे लगा रखी है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो फ्रॉम इस तरीके से हो रहा है और इलेक्ट्रोड ए के द्वारा एडी करंट भी यहाँ पे जो होंगे कॉज करेगा चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉज क्या है, E इज इक्वल टू बी डी वी इंटू 10⁻⁻�8। तो E इज नथिंग बट इंड्यूस वोल्टेज, ओके, एंड B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला and D is the distance between the electrodes. In meter, V is the average velocity of the liquid in millimeter per second. So mathematical expression we got as voltage E divided by BD. So the volume rate is equal to Q into A is the A cross section of the pipe and V is the average velocity of the liquid. Substituting those values in equation from equation 1 in equation 2, you will get it as A की जगह B की जगह आपने यहाँ क्या पुट कर दिया, अपनी V की जो वेलोसिटी भी आपने पिछले इक्वेशन निकाला वो यहाँ पे इसके अंदर इक्वेशन पुट अप कर दी। So as A, B and D are constant for particular electromagnetic flow meter, so induced
वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट। जैसे आप देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी वो आपका वॉल्यूम फ्लो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दिस इज द डायग्राम ओके फॉर electromagnetic flow meter student. So advantage is good accuracy and reliability, simplicity and ruggedness, and fast response. Disadvantage, that is inexpensive, not suitable for conductive fluids. So we have another measuring device, that is hot wire anemometer. So आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने यहाँ वीट्स बैलेंस डिटेक्टिंग गैल्वेनोमीटर का यहाँ लगाया हुआ है along with the व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। हॉट फायर प्रोब हमने यहाँ कंसेप्ट किया हुआ है, और जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट के अक्रॉस में हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है कि कितना हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग मीन एंड फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटीज। फ्लो सेंसिंग एलिमेंट इज प्लेटिनम टंगस्टन वायर। प्रिंसिपल बिहाइंड इज व्हेन अ हीटेड प्रोब इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्लूइड स्ट्रीम। कहता है कि जब आपका हीटेड प्रोब को इंट्रोड्यूस किया गया फ्लूइड के अंदर, तो इट टेंड टू गेट कूल्ड बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एंड कंसिक्वेंटली देयर इज ए डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने हीटेड प्रोब को फ्लूइड स्ट्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो ये जल्दी जल्दी क्या होगा, कूल होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के द्वारा, और देयर इज ए डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस. If the same is connected by the Wheatstone bridge, then the instrument responds in direct measure of the flow velocity, hence the flow. Okay, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, the velocity measurement is done in two ways. That is constant current method, and another method we discussed. First is constant current method. That is, in this method, the sensing element is feed constant current, and the knowledge of the current and the resistance of the wire defines the power being fed to the wire, so which is a function of the flow velocity. So this method can be used at higher frequencies, relatively small signals. Second method we have is constant resistance or constant temperature method, and in this method the current to the hot wire is continuously adjusted by means of suitable servo system to maintain the resistance of wire and the wire temperature at a constant value throughout the range of the hot wire operation. So the current of the voltage is then measure of the heat transfer rates and hence fluidity and the fluid velocity. So the basic governing equation of the hot wire operation is based on King's law, which is given by this equation. So you do not learn this such kind of difficult equation, but you have to understand the classification of these both the methods and write it in brief in the university examinations. So what the advantage of hot wire anemometer, student? What is the negligible resistance disturbance to the metering fluid system? Excellent accuracy of the order of plus 0.% in the measurement mean velocities and plus minus 2% of the measurement of turbulence level. Has excellent dynamic characteristics and output read can easily be either analog or digital. So measuring range can be from very low velocity to supersonic velocity. Measuring range can be from low velocities to supersonic velocity. So these are some advantages in the hot wire anemometers we discussed, and which are these measurements systems comes under variable head. So are important for the short point of view, so you have to consider only the brief notifications. So from this lecture, this is complete now. I hope कि आपको समझ में आया होगा. So for this lecture, thank you for watching the lecture series.